They are not even getting time to read. And again, then we are saying, you should read, you should read, you should adapt that habit. Absolutely. But how will they do अगर उनको बीच में वो एक hollow time ही नहीं मिल रहा है? सबसे important है, I think अगर हमें reading as a hobby develop करनी है, once they delve into the world of books, it's an unending world. So Prachi, what is your approach if we talk about sex education, especially in teenager kids and in a very small kids? As parents and as school, हम try ये करते हैं कि हम हमारे नर्सरी के बच्चों से हम गुड टच बैड टच उनको सिखाना चालू कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट उन्हें ये पता हो कि उन्हें उनके प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स विच दे कैन शो टू अदर्स एंड दे कांट शो टू अदर्स. एंड थैंकफुली हमारी गवर्नमेंट भी इस पे बहुत वर्क कर रही है, जो बहुत सेंसिटिवली बच्चों को मैसेज पहुंचा रहे हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अगर उसको सेंसिटिवली और ओपनली बात करें, तो यू हैव टू टेक इट एज अ वे ऑफ लाइफ. So Prachi, what is your take on tech-driven education? That technology will continue to be a part of the education system. So instead of fighting with it, we should be friends with it. हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, हमारी ट्रेडिशनल पेडागॉजी को रिप्लेस नहीं कर सकता. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम टेक्नोलॉजी को विद द ह्यूमन टच यूज करें, because it's a wonderful and a fantastic tool. Welcome to the Komal Show. Today we have a very beautiful guest with us, Miss Prachi Kasliwal Dashora. She's a luminary in education and empowerment. Founder Director, Sheringwood World School. Prachi, we are glad to have you. Thank you so much, Komal. That was a very, very nice introduction. Very humbled by it. So how have you been, Prachi? I'm good. Thank you. Thank you so much. So if you can, my first question would be if you can tell me something about journey as a modern age educationist. So my aim in education field is to bring in the dynamic world of technology with traditional learning, incorporating the innovative techniques with our Indian education pedagogy. So Prachi, ये idea कहाँ से आया to come up with a school? Because I know being a mother of two children, how you have come up with this concept. It is because it was like कोई childhood dream था आपका कि मुझे ऐसा कुछ करना है, or it just came out of with the flow. So I'll tell you what. In my educational qualification in graduation, I had done journalism. Then I did masters in advertising. I ended up doing CA and then getting into the field of education. So I only give credit to my children to bring in this urge of starting a school. Wow. Because if it wasn't motherhood, I don't think I would have ever ended up opening the school. But to bring the best to my children and then give it to the world, I think that was the whole aim of starting the school. Okay. So Prachi, since you are into this field since many years, तो जो आजकल की जो mental health की जो issues बढ़ रहे हैं, it's rising every day with the students. So how would you like to address it? इसको हम कैसे resolve कर सकते हैं? Any thought? So मेरा ये मानना है कि mental health is paramount. It is in this hyper-connected world, mental health issues are there. हम उसको avoid नहीं कर सकते. But especially in students nowadays. Yes. तो हम what as educator और as parents हमारा सबसे बड़ा responsibility बनता है कि हम उस चीज़ को accept करें, कि हम उसको acknowledge करें and then हम उस चीज़ पे work करें. So topics like anxiety, depression, stress, ये आजकल normal conversations हो चुके हैं. As educators हमें बहुत ये problems आती हैं, especially during exam times और competitive exams के time पर, where children के ऊपर बहुत pressure रहता है of excelling उनके particular exams में. Our motive is to give them that safe environment जहाँ पे वो अपने emotions को आके express कर सकें, जहाँ पे वो अपने बातें हमसे खुल करके कर सकें. And especially if you're dealing with tweens, pre-teens and teenagers,
क्योंकि वो एज ऐसा है जहाँ पे इट इज़ वेरी क्रूशल, इट्स द एज ऑफ देयर सेल्फ डिस्कवरी, बट ऑल्सो एन And एज when they are फॉर not communicating with the parents properly, then there's a teacher. Yes, there's a teacher, there's a counselor. That's a major role comes in. So I keep telling my teachers also that सबसे important role है कि आप उनके friend बने. Yeah. Once you are a friend to a student, they will learn everything that you teach them. Also, they will be very open to you about how they're feeling. वो छोटी सी बात क्यों ना हो कि उन्हें मैथ्स की कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, से बड़ी लेकर के ऑफ पीयर प्रेशर, which is a very very important topic to address to the students. Yes. And as you are saying about the mental thing also, I would like to tell you that, you know, first you said it very beautifully, that first you have to recognize that you have that issue. Absolutely. And we have to resolve it. We think we all are like good, we are doing good in our lives, our students are doing quite good, but वो चीज़ हम लोग realize ही नहीं कर रहे हैं. I think that is there. सबसे important है कि हमको acknowledge करना पड़ेगा, फिर हमें accept करना पड़ेगा, फिर हमें उस चीज़ पर act करना पड़ेगा. True. And I also feel that we should make our students realize that they can come to seek help. हमें उस चीज़ के लिए available होना बहुत ज़रूरी है. In the highly competitive world that we are living in, it is very important that बच्चों को ये sense of security होना चाहिए कि मैम के पास जाकर के I can talk anything and everything to her. Like you have somebody. Yes. To rely on, to trust on. हाँ. फिर आगे जाकर के हमें अगर ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल इंटरवेंशन ज़रूरी है कोई पर्टिकुलर केसेस में, तो वी ऑलवेज सजेस्ट टू पेरेंट्स that you can see a counselor, you can see a psychiatrist, etc. But mental health problems can be dealt with. It's having a healthy lifestyle, having good physical activities, and a good routine is the stepping stone to mental well-being of children. Yes, true. Yes. And I would like to add something here, like if I talk about exams, which are like again September में exams are Yes. So exam pressure is a very hot topic among parents as well as among children. So how do you deal with that, and how we should deal with that as a parent and as a student also? तो मेरे पास जैसे ही एग्जाम की डेट्स अनाउंस होती है, द फर्स्ट थिंग पेरेंट्स कम एंड से इज दैट आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स बंद करा दो. अच्छा, बिकॉज हमारे बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करना है. एंड आई ऑलवेज काउंसिल द पेरेंट्स दैट अगर उनको पढ़ाई अच्छे से करनी है तो उनके लिए स्पोर्ट्स खेलना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो केमिकल्स, जो हार्मोन हमारी बॉडी से सीक्रेट होते हैं व्हेन वी आर आउट इन द फील्ड, इन द फ्रेश एयर, प्लेइंग विद आवर फ्रेंड्स, दैट हेल्प्स अस इन बिकम बेटर एट स्टडीइंग. तो एग्जाम प्रेशर रहता है, पर मैं मेरे बच्चों और मेरे पेरेंट्स को हमेशा एक यही चीज़ बोलती हूँ कि गुड टाइम मैनेजमेंट, हैविंग अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एग्जामिनेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड एक बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए दैट एग्जाम्स आर नॉट द एंड. It's a process in the journey of learning. Yes. It can never be the end. So you may not do very well in a certain exam, but if you continue your process or your journey, eventually आप बहुत अच्छा कर लोगे. So that is very important. And also सबसे important है कि parents बच्चों पे pressure नहीं डालें. That is where it is coming down to the children. Yes. It's very important that बच्चे वैसे भी pressure में होते हैं कि हर बच्चे को लगता है हम फर्स्ट आए या हम इस सब्जेक्ट में टॉप करें, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक अटेम्प्ट में क्लियर कर दें. हमने बहुत केसेस देखे हैं. नीट का बहुत रिसेंटली केस हुआ था where a couple of kids very sadly even took their lives because they couldn't clear and they couldn't do. and IIT के साथ तो हमेशा ही होता है, IIT JEE एडवांस्ड, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है. Then they end up having disorders like IBS or depression or stress. So exams are there. It will continue to be there. It is about how as educators, parents and as a society हम उस चीज़ को डील करें और उस चीज़ को recognize करके हम हमारे बच्चों को ये समझाएं कि
ठीक है बेटा, you can do okay in the exams. The point is that you have to learn. Yes. You should not just do rote learning. उसको experiential learning बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. एंड व्हेन यू सी ऑलरेडी इतना प्रेशर है बाहर से, तो एटलीस्ट वी हैव टू क्रिएट वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट एट होम And at schools. एंड स्कूल्स. And schools. तो अगर हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा 5 घंटे की स्कूल या 6 घंटे का स्कूल करके फिर हम उसको 2 घंटे की ट्यूशन क्लासेस और भेज देते हैं कि वो और अच्छा कर ले, तो आप और मैं आज अगर हमें भी बोले कोई कि यू स्टडी फॉर 7 hours at a stretch and then you come home, complete your homework, it's practically impossible. It's not human to do it. Yes, very true. Yeah. So I think we need to understand that children are children. They need to play, they need to study, they need to experience new venues where they can excel. Yes. And that's why I always insist कि बच्चों के लिए games और sports बहुत important realm है in the process of learning. Yes. And I think Prachi, reading is also equally important. Absolutely. I think I remember हमारे childhood में we used to read a lot of magazines, lot of comics. कितना आता था, like vacations हुए नहीं, and we are like, you know, we want to read it out. हम कितने comics I still remember हम finish करते थे. And now if we look at the children, हम लोग उनको इतनी classes भेज रहे हैं, इतना school के बाद उनके पास burden है, they are not even getting time to read. And again then we are saying you should read, you should adapt that habit. Absolutely. But how will they do अगर उनको बीच में वो एक hollow time ही नहीं मिल रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट है, आई थिंक, अगर हमें रीडिंग एज अ हॉबी डेवलप करनी है, दैट वी एज अडल्ट्स नीड टू रियली स्टार्ट रीडिंग आवरसेल्व्स. व्हेन अगर कोई भी बच्चा है वो घर पे देख रहा है कि दादा दादी बुक लेकर के बैठे हैं या मम्मा पापा बुक लेकर के बैठे हैं, इवेंचुअली दे ऑल्सो स्टार्ट with that thing. They'll start small. They might not read a lot even in the beginning, but once they delve into the world of books, it's an unending world. मतलब वहाँ से तो जो उनका world चालू होता है, it's like a magical world. Very true. I mean, there are so many people. अगर आपने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री देखी है, तो उसमें रोआल्ड डाल ने इतने साल पहले बोला था, स्पेशली इन द सीन वेयर वो बोलता है कि डोंट वॉच टीवी, यू शुड ओनली रीड एंड रीड. तो उस टाइम का टीवी और आज की स्क्रीन आर द सेम थिंग. इफ किड्स आर एडिक्टेड टू एनी सॉर्ट ऑफ गैजेट्स और टीवी और आईपैड्स, उनके लिए बुक पढ़ना बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक हमारे को एज अडल्ट्स वी हैव टू गाइड देम एंड टेक देम टू बुक स्टोर्स. हम कैफे और प्ले जोन नहीं ले जा करके उनको हम बुक स्टोर्स ले जाएं. लेट देम एक्सप्लोर. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फर्स्ट टाइम में ही and I think all the schools nowadays, all the good schools have libraries now. Yes. You all have in-house libraries in your school. Yes. You can definitely go along with, go for that. और हम कितना भी बोल ले, books are books. Books are books. No Google can take place of books. No Kindle. No Kindle can take place of books. Having a heart-bound book, the smell of a fresh book is that feeling is different. Is ethereal. Absolutely. So Prachi, what is your approach if we talk about sex education, especially in teenager kids and very small kids? Because if we see the recent scenario, recent cases, nowadays छोटे बच्चे, very small kids, I'm talking about junior school kids, like who are not even teen now, they are harming either themselves or their fellow kids. छोटे बच्चे एक दूसरे को harm कर रहे हैं. They have no idea what are they doing. They are very small. So how we have to keep, is there anything which you would like to share? So because it's heartbreaking. Absolutely. And बहुत ही pressing issue है आज की society में. Thanks to all the social media platform और unwanted content जो बच्चों के access में है. बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है. एज पेरेंट्स एंड एज स्कूल हम ट्राई ये करते हैं कि हम हमारे नर्सरी के बच्चों से हम गुड टच बैड टच उनको सिखाना चालू कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट उन्हें ये पता हो कि उन्हें उनके प्राइवेट पार्ट्स क्या है, पार्ट्स विच दे कैन शो टू अदर्स एंड दे कांट शो टू अदर्स. तो वो इज़ द स्टेपिंग स्टोन.
फिर जहाँ तक हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को इस बारे में अवेयर कर दें दैट sex education is an important topic to address. But Prachi, they are very small. How we can convey this to them at that age, whereas they don't even know anything? Absolutely. तो यहाँ पे सबसे important आता है where you show them age appropriate content. And thankfully हमारी government भी इस पे बहुत work कर रही है, where they have designed cartoons, they have designed comic books, you know, जो बहुत sensitively बच्चों को मैसेज पहुंचा रहे हैं. तो बच्चे एज दे सी द कार्टून एज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, बट दे आर अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्स एजुकेशन. एंड व्हेन इट कम्स टू टीनेजर्स, प्री टीन्स, जहाँ पर एक्चुअली उनकी बॉडी डेवलप हो रही है, आई मीन इट्स वेरी नाइस कोमल टू नो दैट जो टीनेजर वाला एज है बच्चों का, दैट इज व्हेन बच्चों का मैक्सिमम ब्रेन डेवलप होता है. ना ही वो चाइल्डहुड में डेवलप होता है, ना ही वो अडल्ट्स में डेवलप होता है. जो टीनेजर वाला एज होता है तब सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होता है. और इस टाइम पे बच्चों को सेक्स एजुकेशन, चेंजेस इन देयर बॉडी, हार्मोनल चेंजेस, यू नो, लॉट ऑफ गर्ल्स स्टार्ट गेटिंग एक्ने, a lot of boys start changing their tone of voice. ये सब चीज़ें अगर हम उनको पहले से बता दें तो उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है. हाँ, so they'll be prepared. They are prepared mentally, and they are aware that things like this will happen. You know, when it comes to the first periods of girls, for example, you know, in our school we had already taught them the hygiene that they will have to maintain, you know, what bodily changes they will go through. ये सब चीज़ें अगर आप बहुत सेंसिटिवली और ओपननेस के साथ में बच्चों से डिस्कस करें, अगर आज हम ही उस बात को हिचक के साथ बोलेंगे तो बच्चा who is still not very matured, उसको लगेगा कुछ अजीब है. Yes, there's something weird, or मैम बहुत ओपनली नहीं बात कर रही है, या मम्मा बहुत ओपनली बात नहीं कर रही है, तो मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर उसको सेंसिटिवली और ओपनली बात करें एंड टेल चिल्ड्रन कि ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है और हर किसी के साथ ये होता है. So you have to take it as a way of life. Yes, very true. And that is where it is important to make children be aware so that they can make the right choices when they get to the freedom of doing everything. Correct. So Prachi, इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, like as we are talking about child abuse and all. So what about child bullying and all? Because देखा जाता है बच्चे आपस में एक दूसरे को bully करते रहते हैं, and lot of things happening in the school, and sometimes, you know, kids doesn't want to share it with the parents, not even with the teachers. And there is something called yes or no. There is a constant thing जो आजकल family में भी, like if a brother is saying not to do that, I'm not talking about here, I cannot be gender biased, but if brother is saying not to do that, sister should not do that, or the same way. So how to teach them this thing? Like, या तो is there आपको लगता है कोई पॉलिसी होनी चाहिए स्कूल में, और समथिंग लाइक दैट, कुछ न्यू चेंजेस हमें लाने चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, विच कैन हेल्प ऑल दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये बढ़ने वाली हैं प्राची टाइम के साथ, बिकॉज हमने जितना उनको एक्सेस दे रखा है, सोशल मीडिया, डिजिटली एक्सेस, it's not gonna, हम पीछे तो अब नहीं जाएंगे बैकवर्ड, तो it's gonna increase only. So can we change something in our education system? तो जब bullying की बात होती है, there is a research that was done very recently, and they had spoken to children who are bullying others. और कुछ points इतने fantastic आगे आए हैं. So some of the points I would like to highlight. When a child was asked, why are you bullying somebody? He said it happened somewhere in your school, or not in school. Achha, it's a research done abroad. Okay. The child said that when I bully somebody, I start feeling superior. तो actually underlying truth है कि उसको inferiority complex थी, उसको वो cover up करने के लिए bully कर रहा था. The next child said that when I bully somebody, I start feeling smarter. And I feel that the other child does not know something. The underlying fact is that there was lack of empathy.
तो हमें एक्चुअली ये नहीं देखना चाहिए कि बुलिंग का क्या हो रहा है. वी हैव टू रियली गो टू द लेयर्स एज टू व्हाई अ चाइल्ड इज बुलिंग अनदर चाइल्ड. और ये लेयर्स पे जब हम जाते हैं तो वी कम टू रियलाइज कि बहुत स्मॉल चीज़ें हैं. अगर हम वो बच्चे को जो बुली कर रहा है, अगर हम उसकी सेल्फ एस्टीम पे वर्क कर ले, अगर हम उसके कॉन्फिडेंस पे वर्क कर ले, अगर हम उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दे दें, तो शायद बुलिंग कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाएगी. पर हमें बहुत नीचे जा कर के लेस हम सुपरफिशियली देखते हैं कि ये बच्चे ने बुली करा है. such a beautiful thought यार. such a beautiful thing. हम हमेशा ये सोचते हैं आपने उसको क्यों बीट किया, आपने क्यों करा. आप उसको स्कॉल कर रहे हो, the person who is doing it, you're not realizing the fact why is he doing that. So this is the most important कि आप what पे जाते हो. Why पे नहीं You don't go on the why of anything. भले ही वो बुलिंग हो, साइबर क्राइम हो, ऑनलाइन प्रेडेटर्स हो, हम वो कोई भी एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, बट हम हमेशा उस चीज़ की सुपरफिशियलिटी पे जाते हैं. वी गो ऑन द व्हाट ऑफ द थिंग और द हाउ ऑफ द थिंग. वी डोंट गो ऑन द व्हाई a certain act was done. That is the most important thing. As a school, of course, we have to morally educate children. हमको वापस उनको वो सेंस देना पड़ेगा कि आपको एम्पैथी होनी चाहिए, आपको सिंपैथी होनी चाहिए दूसरों की तरफ. इस चीज़ में कम्युनिटी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. When children know कि हमसे भी लेस एक्सेसिबल लोग हैं, अगर उन्हें वो सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस आ जाता है, तो ये सब चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं. वेरी ट्रू. तो एज अ स्कूल आई थिंक, और एज एजुकेशनिस्ट, आई थिंक वी ऑल हैव टू रियली वर्क ऑन giving a lot of self-esteem, building a lot of confidence in children, and doing a lot of community service as a part of the school curriculum. आज हम बच्चों को हिंदी पढ़ा देते हैं, हम EVS पढ़ा रहे हैं, we're even teaching them foreign languages, but where is community service? Yes. Where is integrated community in our entire curriculum? I think there has to be a different subject. Yes. There has to be a separate subject for the same. Absolutely. Kids should learn that. And again, I would say parents भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. वी हैव टू मेक देम लर्न एम्पैथी. हम घर में कई बार देखते हैं ना, मेट्स के साथ किड्स आर नॉट वेरी गुड. बिल्कुल. वो मेट को कुछ भी बुला रहे हैं, दे आर लाइक ड्राइवर्स, हमारे पर्सनल जो सर्वेंट्स हैं. तो वी हैव दिस स्टार्ट्स फ्रॉम होम. इफ वी वांट रिस्पेक्ट देम, एब्सोल्युटली दे आर नॉट गोइंग टू डू इट. वो वैसे भी बोलते हैं ना कि पेरेंट्स आर मिरर्स ऑफ द चिल्ड्रन. तो घर पे पेरेंट्स, फैमिली या स्कूल में टीचर्स और सोसाइटी में जो हमारे बड़े लोग हैं, अगर वो लोग जैसा करेंगे वैसा ही इमैक्युलेट होएगा हमारे बच्चों में. They are going to copy everything that we will do. So we are their role models. Very true. And and you are role model to many. No. as a mentor, as an educator. But Prachi, इसमें कोई interesting story स्कूल में कभी हुई हो whereas you felt very proud? I think that I am sure बहुत सारी होंगी. But if you would like to share some stories जहाँ बच्चों ने आपको कुछ special feel कराया हो या आपको लगा हो because of your mentoring you could change some lives. Or So parents I think things like this happen on an everyday basis. Oh, wow. Honestly, You're so lucky. अभी एक नया trending topic चल रहा है which is called glimmer, which is the opposite of trigger. Okay. Glimmer are basically incidents in your everyday life where you feel proud, where you feel happy, and triggers are incidents in your life where you lose it. Okay. So, you know, I always tell my children also, look at the glimmer in your life. Wow. Look at what good you are having, you know. So if you are having food on your plate, that is itself a glimmer in life because not everybody is getting it. Right? And if you have a wonderful teacher in school, that is also a glimmer because not everybody has access to education. or activities. Right. तो I think ऐसे incidents तो मेरे साथ बहुत होते हैं. कुछ एक दो शेयर करना चाहोगे? Wow, I will really have to think deep now. You can think. So I think when parents come
and tell me कि my child was looking in the mirror and saying कि I'm Prachi ma'am. Oh wow. And I would dress up like her, or their hair would be like me. Uh-huh. That's where I feel that, okay, you know, I do have kids who want to become like me. Yeah, like beauty Which with is- brains, you know. Even my They son, even he talk. studied in your school हाँ, and he yes, used to love the yes, Prachi ma'am is very absolutely. sweet. Joy was तो- like every time Prachi हाँ. ma'am, and he loved the तो मुझे ऐसा entire. लगता है कि if I'm making even a smallest difference in anybody's life is what is the most important thing. So वो Wow. भले ही मेरे स्कूल का support staff हो या teachers हो, बच्चे हो, parents हो, just making small differences is what my journey is going to be. And I think You know. these small things can create a big impact in somebody's life. Yes. And I think आप तो इतने सारे बच्चों को you know Hmm. अपनी उनकी जर्नी में हेल्प कर रहे हो Hmm. तो you play a major role in that. Hmm. So Prachi, what is your take on tech-driven education and also See, AI? Thanks, but I think technology is something that is a part of life now. We will have to accept that technology will continue to be a part of the education system. Mm-hmm. So instead of fighting with it, we should be friends with it. Mm-hmm. And हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारी एजुकेशन सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, हमारी ट्रेडिशनल पेडागॉजी को रिप्लेस नहीं कर सकता. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम टेक्नोलॉजी को विद द ह्यूमन टच यूज करें, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल एंड अ फैंटास्टिक टूल. नो टू वेज अबाउट इट. स्पेशली जहाँ पे हम बोलते हैं कि जेन जी, जेन अल्फा बच्चे हो गए हैं, तो उनके तो हाथ में हमने टेक्नोलॉजी दी है. दे आर बॉर्न विथ टेक इन देयर हैंड्स. वो अलेक्सा हो, सीरी हो या आईपैड, किंडल, एनीथिंग, दे आर बॉर्न विथ इट. और उनका माइंड, उनका ब्रेन भी टेक की तरफ ऐसा मोल्डेड है कि हम टेक्नोलॉजी को हटा नहीं सकते. जस्ट टू काउंटर बैलेंस द कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें उनको नेचर से उतना ज़्यादा एक्सपोज करना चाहिए. जहाँ पे हमारे बच्चे एक रूम में बैठ करके हेडफोन्स लगा करके लैपटॉप पे बैठे हैं, हमें उनको ये भी नॉर्मलाइज करना चाहिए कि ट्रैक्स पे जाना इम्पॉर्टेंट है, नेचर वॉक्स पे जाना इम्पॉर्टेंट है. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चों को काउंटर बैलेंस कर सकें. अगर हम टेक्नोलॉजी को फ्रेंड बना रहे हैं तो हमें नेचर, फ्रेश एयर, ओपननेस, ये सब and चीजों also को I think भी I should say friend to बनाना make चाहिए. them religious, Oh to yes, make them aware to about make them the spiritual I should very say, very important. because I think that is something which other countries are learning from us, but you know somewhere in this tech world we are losing you know. हाँ. मतलब अभी वेरी रिसेंटली आई हैड मेट, हमारे स्कूल में मधु माता जी आए थे फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल, जिनने एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और पेरेंटिंग के ऊपर हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया था. उनने हमको यही चीज़ बोली थी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज की जहाँ हम बात करते हैं, तो ये भगवद गीता में इतने टाइम पहले लिख चुका है कि आपके मन को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. जहाँ आपने अपने मन को अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया, वहाँ पे आप जीत गए हो. एंड हम स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन, इन सब चीज़ों को बहुत सेक्युलरिज्म के नाम पे एक एक्सक्यूज बना दिया है कि हम फॉलो ही नहीं करेंगे बिकॉज हम सेक्युलर हैं. तो हमें ये चीज़ बाइफिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि रिलीजन इज डिफरेंट, स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट. स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट विल काम यू डाउन व्हेन यू हैव स्ट्रेसफुल सिचुएशन. Spirituality is what will give you that anchor in a turbulent sea, you know. तो it's very important कि हमारे बच्चों को भी हम ये knowledge दें, but to give it to our kids, it's very important that we become spiritual in the first place. Very true. तो हर चीज़ जो हम हमारे बच्चों के साथ करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अडेप्ट करना पड़ेगा एंड हमें उस चीज़ पर काफ़ी डेडिकेटेडली वर्क करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे उसको सीख सकें. Because I think Prachi, I feel abhi to it's all fine, but you know when they'll be entering in a different world, and when you look at our kids,
nowadays most of the kids are like in junior school only, they are going abroad, they are Yes. studying in abroad. Yes. So वहाँ उन लोगों को spirituality वाली जो Hmm. ये element है, then they'll get to know, हाँ because then they are all alone there in that हाँ, world. So I think बिल्कुल वहाँ पर इसका बहुत बड़ा एक important role बहुत होने वाला है. इम्पोर्टेंट चीज है वो, भले Yes. ही बच्चा नमाज पढ़ रहा हो या हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो, अगर वो बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ के Yes. मुझे कामनेस हो रही है, आई एम बिकमिंग मोर यू नो, एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव देयर ओन पावर. Yes. उनका खुद का अपना एक Yes. ऑरा भी है which turns out to make your child more smarter and more sharper. Yes. वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. Very true. हमें हमारी कल्चर, हमारे इसको संस्कृति को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना नहीं चाहिए. लेना चाहिए, and especially when you know, we were talking about भगवद गीता. अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो we say if you want to do business, read भगवद गीता. एनीथिंग, You will get everything there. एवरीथिंग. is there. बिजनेस करना हो, आपको एजुकेट करना करना हो, हो. आपको किसी भी चीज में अगर इफ यू वांट टू डाइव इनटू इट, भगवद गीता is supposed to be the ultimate source of knowledge. Very true. Very true. So it's amazing that how छोटे छोटे से mantras in Bhagavad Gita can actually impact your life so Yes. much. So Prachi, I just would like to ask you, like when we are talking about nowadays emotional intelligence, so how we can connect it with the education, and how, you know, what kind of role it plays when it comes to education? So I think कोमल की emotional intelligence उतना ही ज़रूरी है जितना intellectual intelligence ज़रूरी है. Emotional intelligence basically उस बात को कहते हैं which make us a well-rounded individual. Yeah. तो आप में बहुत नॉलेज होगा, आप कोडिंग कर लेंगे, आप जावा कोड्स कर लेंगे, आप रोबोटिक्स कर सकते हैं, बट जहाँ पे आपको किसी से बात करना नहीं आता या आप अपनी बात आगे नहीं रख पाते हैं, आपका कितना भी इंटेलेक्चुअल नॉलेज होगा, वह यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इन दैट. And that's why emotional intelligence plays such an important role Yes. in a person's success. You know, in terms of how you put forth your topic or how you maintain your work dynamics. Why just work dynamics? I think dynamics in every human relationship that you will have. Yes. And that's why we, from the very small age, हमें emotional intelligence को as again a separate topic भी लेना चाहिए in school. When we talk of empathy, sympathy, compromises, you know, even regulating your negative thoughts of jealousy, malice, of finding happiness in somebody else's success. I think that is the most hot topic and very important thing Yes. to discuss Absolutely. at the very initial age. Yeah, very important Very that important. it's okay to feel jealous. Yes. It's okay to feel anxious. Yes. But हम उस चीज को regulate कैसे कर सकते हैं and to turn it into a positive emotion Yes. is where emotional intelligence actually plays a role. Come. And how to let go of things बिल्कुल. which is harming you from Absolutely. inside. I think that is something very important. हम इंडियंस होकर के आई नो सो मेनी पीपल हु आर फॉलोइंग इकिगाई, जो एक जापानीज स्पिरिचुअल वो है. हम एक्चुअली फ्रॉम आवर कल्चर, हमारे उसमें तो इकिगाई बहुत पहले से था. बहुत पहले से था. जस्ट दैट हमें वेस्टर्न वर्ल्ड या कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट बहुत अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम उन चीजों में चले जाते हैं. नहीं तो इफ यू से योग इंडिया से निकला, योग से योगा हो गया, एंड नाउ एवरीवन वांट्स टू डू इट बिकॉज़ नाउ इट्स ट्रेंडिंग. Yes. So I think one challenge that I usually face in the field of education is making children very proud Indians. That's beautiful thing. Yes. To do. Because ठीक है, हमें of course attract करता है. I am not denying that. पर हमारे इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर है, जो फूड कल्चर हमारे यहाँ पे है, जो संस्कृति हमारी है, जो हमारा पहनावा है, हमें उस चीज़ के बारे में वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड. एंड इट इज माई अल्टीमेट थिंग टू मेक आवर चिल्ड्रन वेरी प्राउड इंडियंस. Wow. That's a very very important thing that we kind of tend to forget or not pay heed to while we are making our children learn and grow.
And I think you can only do it, Prachi, because if I talk about as an educationist, you are running your own school from like since years and years, and people look up to you. Children look up to you. Sometimes they are not even listening to us, but they listen to you. So I think this is your prime responsibility also, and to all the schools Absolutely to do this. And I think this is very beautiful thought कि you should be proud Indian सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ. तो अब हम यही बात कर रहे हैं, तो प्राची, I would like to ask you something. If I'm like, as I'm running a community of mothers, and whereas we have like more than 47,000 mothers connected of Indore, so I keep seeing there are so many queries, people are keep on asking questions, and ये as a mother मेरा भी एक question है, because nowadays if we talk about, there are so many kids, there are so many students are opting प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एज अ करियर, एंड यू नो बहुत ही एक शाइनिंग एंड ग्लैम वाला करियर है ऑप्शन, बट स्टिल समवेयर बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, यू नो वी आर लिटिल कंफ्यूज्ड that whether they should opt it as a full time career or not, and we are trying to balance it out. And यही queries हमारे इनमो पे भी आती है कि मेरा you know मेरे बच्चे का studies में इतना मन नहीं है, they don't want to do, but he wants to do football, he wants to do something else. So do you really think this, what will be like, will it be emerge as a future in India? Absolutely. I mean, I completely think कि sports एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शन अभी भी है और आगे और ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स हमेशा से एक बहुत अच्छा फील्ड है. सो जहाँ पे हम हमारे टाइम पे हमारे मम्मा पापा यही बोलते थे कि लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ. It was like a hobby for us. ये बट बैडमिंटन ऐसे ही खेल लेना. We never thought of taking it as a career. Yes. But बाहर अगर हम देखते हैं कि आज इस बार ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स में अगर हमने देखा हो तो USA has won so many medals. You know, China is been doing really well. India में things are still growing. But as a career option, professional sports is a wonderful career option. We are on that path of making professional sports as a full-time career option. और नई नई चीज़ें जैसे हमारे कबड्डी लीग आ रहा है, IPL है, और बैडमिंटन में इतने लीग्स चालू हो गए हैं. ये सब चीज़ों के कारण अब हमारा Indian sports scenario is going to improve by many folds. And what about your school? Are you like working on it? Yes, we are already. In fact, Komal, you will be very surprised that my nursery children are also learning how to play professional sports. Wow. तो चाइना में तो बचपन से ही बच्चों को हमारे डाल हमको देते लगता है अभी तो बहुत छोटा है. हाँ, too small. कि अभी तो चलो गार्डन में खेलने चले जाएगा, वो भी important है. But the earlier you start with a professional sport, the better it is. But you should also let the children choose the sport they like. Forcing them is not right. They should have an internal locus of control on the choices that they make. तो हो सकता है किसी बच्चे को स्विमिंग अच्छा लगता हो, किसी बच्चे को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता हो, किसी को बास्केटबॉल अच्छा लगता हो. हमें उन बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए. By the age of 6 or 7, that's when they can actually choose कि अच्छा मम्मा, now I want to get into you know professional diving for example. और अब तो fencing आ गया है, shooting आ गया है. There are so many new sports that have come. Polo is there, equestrian is there. I mean, our children are blessed that they have so many good options to explore and exposure to all of these. But I think equally confused when it comes to, again, I'm talking as a parent. Like sometimes, you know, we feel like this is a very practical thing that I want him to play football, but he's interested in swimming. So it's like, you know, itna balance out karna. So would you like to give any message? So well in swimming. Yeah, he's doing so I think you should just let him do. You know, my daughter is playing golf, which is not a very conventional sport option. Yes. But she is doing exceptionally well. But Prachi, I've kept him free only. Whatever you want to do, you do. But that is how parents this is something where this is something where parents have this thing कि या तो वो सब कुछ करवा देंगे. You play football as well because I want you to play. Papa wants something else. Papa wants him to go for something else. So you know, बच्चों के लिए it's like something which बहुत ज़्यादा pressure हो रहा है. तो I just want you to give a message to all the mothers who are there in my community that you know, उनको फ्री छोड़ दो. बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जनरली हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो वी ऑलवेज थिंक दैट इट्स ईदर परमिसिव पेरेंटिंग और डिक्टेटरशिप. देयर इज अ मिडवे पेरेंटिंग वेयर वी कैन ड्रॉ द रेन्स
of parenting, but yet give our children the freedom to choose what they want to do. We are not their managers or their bosses. We are there to guide them, to counsel them, and to help them on the paths that they have chosen by themselves. Wow, thank you so much, Prachi. Yeah. Prachi, there is one more question again. When it comes to community, I would like to ask, there's so many educational boards nowadays, you know. There was a time जब हमारे यहाँ सिर्फ दो होता था, CBSE and MP board. Yes. Now there's so many options. So like how we can choose that which board is better for my kid? And because some people say if you want to send him abroad, then go for this. If you want to, you know, he wants to do some business in India, you have to send him for this. So how we can make that difference? कैसे करें? तो आज के डेट में तो बहुत ऑप्शंस है. It's like a menu card. You have literally जहाँ पे you have CBSE, ICSE, CI, IB, state boards, everything. What is most important is कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि बोर्ड is there, but हमें हमारे बच्चे का holistic development करना बहुत ज़रूरी है. तो हर बोर्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट. कुछ बोर्ड्स मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो कुछ लैंग्वेजेस में कुछ बहुत अच्छे हैं. द ओनली थिंग वी हैव टू रियलाइज इज दैट एजुकेशन बहुत डायनामिक वर्ल्ड हो गया, एंड इट्स लिटरली चेंजिंग एवरी डे. देयर आर न्यू थिंग्स कमिंग इन. AI ने तो पूरी दुनिया को ही चेंज करके रख लिया है, राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट हमारे बच्चे क्रिएटिव बने. To nurture creative minds which can think independently is most important. So of course when we are choosing the board, we have to understand that CBSE has been the national board and so is ICSE. ICSE is also recognized by the government of India. Okay. Right? Curriculum is very well researched in all the boards. They all follow the NEP pattern. Okay. They all follow it. कुछ सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टी लेवल हायर है ICSE में, कुछ सब्जेक्ट में CBSE में हायर है. Okay. When we talk about IB board or Cambridge International boards, so these are more international boards जो global education की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं. In terms of whether it is IB and CI, they are more into making the children more independent learner rather than being dependent on book and research material. So IB and CI are a lot of research based and teacher guided curriculums. Okay. Right? When ये एक बहुत wrong notion है कि अगर आपका बच्चा IB और CI कर रहा है तो वो इंडिया में हायर एजुकेशन में नहीं जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. IB scores and CI scores are also very well recognized by all the universities and colleges in India also. Okay. And the flip side is also कि if you want to send your child abroad, don't make them do CBSE or ICSE board, which is also wrong. Okay. Right? क्या होता है? As parents हमें बहुत कम information मिलती है. हमें जो information मिलती है वो जो इतना स्कूल ने provide कर दिया, और either we search it like at Google and we but जबकि ये सारे boards to that extent, even the states boards, they are doing a wonderful job. It's nothing wrong in any of these boards. I would personally still make the child an independent inquirer and make him curious, and that's why IB and CI are preferential boards. Okay. Right? Nice. Thank you so much, Prachi. And Prachi, इन सब के अलावा मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ भी जानना चाहूँगी. As you are running 1-2 schools already, and I think third one is you are coming up with one more school, and you have 2 small kids at home. You have husband to take care. So how do you manage balance in between? Like because you know I've been seeing लोगों को बहुत रोजी लगता है कि प्राची has got everything. वो तो कर लेती होगी manage. उसके लिए you know servants होंगे, they'll be taking care of the kids. ये लोगों को एक ये notion होता है that she has everything. That's the reason she is able to do it. But I always say, you know, if you want to stretch yourself, you won't be able to do excel in anything. So anything for those mothers or those people who think that you know हम नहीं कर सकते, she can manage it because you know
थोड़ा सा पर्सनल लाइफ बैलेंस कैसे करती हो एंड हाउ डू यू डू इट? So, first of all, of course, I'm very, very grateful for whatever I have. I mean, from lovely children to a supporting family to a super supportive husband. I'm very blessed and I really count my blessings. Wow. Apart from that, where it comes to work-life balance, I always have followed one rule, which honestly I've only been doing from past 2 years, but I've seen a huge difference that has made in my life. I have started getting up very early in the morning. And by early, I mean like 5:15. And that 5:30 to 6:30 is my me time. Before I kind of get into the hustle of the mornings and everything, I take my cup of tea, my diary, write down my to-do list, or the days, I want to read a book or do anything that I like doing. Wow. So that I honestly suggest to every single woman, whether you're a homemaker, whether you're a working person, you're an influencer, content creator, everything, you have to find that 1 hour which is your time. हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं हमारे फैमिली को, हमारे वर्क को, and also sometimes I think as Indian women we are conditioned that we have to do it. We have to do it. And we have to give our 100% to everything. But it's very important that we take a step back. Yes. And give ourselves also that Yes. importance. Make yourself a priority in life. Yes. Because unless and until आप mentally sane नहीं रहेंगे, you will never be able to give anything to anybody. Very true. So to maintain work-life balance, I would honestly, and that has worked for me really well, is that you need to find that 1 hour where it is completely your time. Morning hours work the best because everybody is asleep that time. So it definitely you have to works. start waking up early Haan. to get that me time, or you have to be a little selfish with your and I wouldn't say it's selfish, it's more of self-love, self-care self-care, जो एक self-love. नई trending Yeah, वो I आ think गया है. Prachi, I was doing one podcast with Neha Di, my elder sister, and she has introduced one term is called unitasking. Okay. So हम mothers ना multitasking वाले trap में फंसे हुए हैं. बिल्कुल. We want to do so many things. Multitasker बनना है, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, we want 100 out of 100 in everything. We want that certificate of merit. See, if I'm making something, cooking, if I'm cooking something, I want कि I should get 100 out of 100 there. If I'm going to workplace, वहाँ भी मुझे full marks चाहिए. So I think we are unable to manage that, balance. सभी जगह आप सब जगह हर वक्त नहीं हो सकते. अभी अब हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम लोग घर के बारे में नहीं सोच सकते, और ये बीइंग मदर हम लोग करते हैं. एब्सोल्युटली. तो वो आपने एक बहुत अच्छी चीज कही है कि 1 घंटा अपने साथ बिताएं. बिल्कुल. एंड दैट इज समथिंग यूनिटास्किंग बिकॉज यू आर डूइंग वन थिंग एट अ टाइम. We are juggling so many balls every single day that we will drop 1 or 2 balls. Yes. And I think that should be okay. हमें ये गिल्ट बैगेज हमारे साथ नहीं कैरी करना चाहिए कि अगर हम ये करें तो हम बच्चों को नहीं देख रहे, या हम बच्चों को देख रहे हैं तो वी आर नॉट लुकिंग एट वर्क, व्हिच अ लॉट ऑफ अस स्ट्रगल विथ. Thankfully you, me, we are very blessed that we have access to a lot of resources, and that has made our life simpler. And I think strong family support system, I think absolutely, that is something very, very important. I mean, I think as women we need to really support each other. Yes. We need to empower each other, and we need to grow and be happy for each other. Yes, that's the most important thing. Yes, very true. प्राची, it was wonderful conversation, and मुझे लग रहा है ये बातें खत्म ना हो और हम इस तरह से बातें करते रहें. Thank you so much, Komal. I think it was wonderful to be on your show. I have been following your show, and you have been taking up such wonderful topics for the audience. Thank you. Would you like to say something to our audience as a last note which you feel, or your mantra of life? There are many things that I would like to really tell, but one thing that I want to end the show with a really good saying that J.K. Rowling had said, that it is our choices that show what we truly are, far more than the abilities that we have. Beautiful. So, thank you. Thank you so much, Prachi. Thank you.